Hello students. In the part 1, we solved few questions on basic fundamentals of transformer which uses EMF per turns, primary rated, secondary rated currents and transformation ratios, how to use transformation ratios to find primary data if secondary is given and vice versa. Okay, now in this part 2 we will use further concepts, okay, to find efficiency of a transformer. Okay, so for transformer efficiency, uh, we use formula. Okay, how we derive efficiency, how we find efficiency for a transformer. Okay, ये हमने already class lectures में discuss किया हुआ है. Okay, at the end of this video I will be providing few questions to practice at home, and such questions will be very helpful to gain concepts and confidence, and they will be probable questions for your coming exams. Okay, so first of all, what is efficiency? So efficiency is always output upon input. Okay, what kind of input? So for transformer it is output power divided by input power. Okay, mostly it is calculated in percentage, so we will multiply 100 here to find the um, percentage value. Right now, what is actually input to the system? Right now, this formula can be modified as this one. So see, one can write output as input minus losses divided by input. Okay, or you can write output upon output plus losses. Okay, now further you can solve this thing as input by input, so it will be 1 minus losses upon input. Okay, from here you can write efficiency will be equal to, so if I take outputs common, so I will get 1 upon 1 plus losses upon output. Output means output power. Like this, I can modify the given formula, but basic formula or basic definition of efficiency is this one: output power upon input power. For percentage, we will multiply it by 100, right? So you can use any one of the formulas, and it depends totally upon the given question actually, right? Which kind of data is available to you. If only losses are and input is given, you can use this formula. Okay, or you can use, if output and losses are given, you can use this formula as well. Otherwise simply you will use this formula. Okay, most famous formula for transformers efficiency is this one: percentage efficiency of a transformers is actually calculated with output power divided by input power, sorry, divided by output power plus losses. Okay, and into 100. Right now, what is output power? Okay, output power is kVA into kVA into power factor. kVA 2 लिखे हैं 1 लिखे हैं की बात है, so I am using only kVA, rating of the transformer, into cos phi 2. What is cos phi 2? It is load power factor. And power is what? Real power is Vrms Irms cos phi. Okay, VA into power factor, like that. So again, output kVA rating into cos phi 2 plus losses. There are two types of losses in transformer: iron losses Pi, which are constant losses, and copper losses, which are variable losses, I square R losses, like this. Okay, now we will use this formula, okay, to find the efficiency of a given transformer. Okay, one thing you need to remember is this kVA is here rated kVA, this I2 is rated current, secondary current I2, right? But as we know, transformers may not work on
100% capacity. That means they may not be working on full load. They may not be working at 100% of the load capacity. They may be working on 70%, 75%, half load sometimes, right? So it is very much necessary to calculate efficiency at different loaded conditions. So we use fractional formula or fractional efficiency formula, where this x represent the fraction of the full load current, full load power, full load condition. So for example, if 50%, okay, if half of load is there, 50% load is there, then x is equals to 0.5, like this. Okay, so x kVA. Now this is the most generalized case. Okay, full load की बात करेंगे, that means 100% load है, then x will be used as 1. So this is the generalized formula. Now this is for any loaded condition, right? But this one was for full load condition only. This was for full load only. Okay, but this one x wala formula is for any kind of load, any fraction of load पर भी हम इसको use करेंगे. Now since I square is there, so this will be used as x square I2 square R2 into 100. This will give you the percentage efficiency of a single phase transformer at any fraction of load, right? So we will use this formula, है ना? चलिए, so let us solve few problems based on this concept. So problem number 1. Okay, problem number 1 is here. So practice question number 3 is given here, which is a transformer is rated at 100 kVA. At full load, its copper losses are 1200 watt and iron losses are 960 watt. Then calculate efficiency at full load, unity power factor. Efficiency at half load, 0.8 power factor. Efficiency at 75% full load and 0.7 power factor. So see, efficiency varies with load and with power factor. ये हमने फॉर्मूला से भी अभी देखा, राइट? हमारे फॉर्मूला में cos phi आ रहा है, this is power factor, है ना? And there is x, okay, which is a fraction of load, right? So it depends on, the efficiency depends on power factor and at what fraction the loaded transformer is given to you. Okay, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फॉर द गिवन क्वेश्चन द डेटा अवेलेबल टू इज द केवीए रेटिंग. KVA rating is, see, it is 100 kVA and you have 1200 watt copper losses and 960 are the core losses. So 100 kVA, that means KVA rating is given, it is 100 kVA and copper losses are given 1200 watt. These are full load copper losses, always remember है ना कि आपको क्या given है. And iron losses are 960 watt. Okay, since iron losses are independent, so full load बोले half load बोले, they are constant, they do not depend on loaded condition. Okay, and now you need to calculate efficiency. So bit number 1 is there, which asks you efficiency at unity power factor. Bit number 1 asks you efficiency at unity power factor and full load. So power factor, that means cos phi 2 is unity, that means 1, and full load means x is 100%. Okay, so by using the formula, efficiency, percentage efficiency is, now x is 1, so formula will be kVA into cos phi 2 divided by kVA rating cos phi 2 plus copper losses and iron losses, full load, right? So here every data is given. kVA is given 100 kVA, so 100 kVA into cos phi is 1 divided by 100 into 10 raised to the power 3, 100 kVA into power factor 1. Iron losses are 960 watt and copper losses are 1200 watt. Into 100 kar denge, so you will get the answer. Now let us solve this one. Okay, so this is
100 into 10 raised to the power 3, and this will become 100 into 10 raised to the power 3 plus this will become 1200 plus 960. This will be your 2160. So on dividing these two, okay, so we will get efficiency of, see, let us solve this one. So 100,000 divided by 100,000 plus this. So ultimately you will get the efficiency of 97 point, okay, you will get 97.88%. Okay, efficiency is 97.88%. It is very high, and transformer is one of the most efficient devices ever invented in this world. Okay, इतनी efficiency एक्सेल में भी मिलती है, सिर्फ theoretical नहीं है, ठीक है ना, practical cases में भी आपको इतनी efficiency available होती है transformer के case में. Okay, now second bit, efficiency at half load, that means x is 0.5 and power factor is power factor is 0.8. So now let us solve for this question. Okay, so this bit, for this bit we will use formula, this one. Now we have generalized formula, so 0.5 into 100 kVA is given and power factor is 0.8 divided by output power plus 960 as it is, क्योंकि वो constant losses हैं. Variable losses में x square, that means 0.5 square will be there into 1200 full load copper losses. So इसको जब हम solve करते हैं, so what we will get, 0.5, 0.8, it will become 0.04, 0.4, 4000 divided by this will be again 4000 plus 960 plus 12, this is 0.25 into 1200. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज में हमें डेटा मिल जाएगा. एंड फर्दर this will be like this, 1200 into this, this is 300 plus 960 and plus 4000. This denominator becomes, the denominator becomes 5260. 4000 divided by this into 100, and this will be, efficiency will be equal to, oh, one second, 0.5 into 0.8 into 100, so this is 40. Okay, so this is 40 into, this is 40 into 1000, so this is actually 40,000 here. Okay, so this will become 40,000 and denominator here it will be 40,000 plus 960 plus 0.25 into 1200. This is 4141260. So yes, this is the correct thing here. Sorry, so 41260. So ultimately the efficiency is 96.94%. 96.94%. Okay, now this is at this condition, half load and 0.8 power factor. Okay, now in the third bit they are asking you the efficiency, so the procedure will be repeated here. Now you have to find the efficiency at 75%. That means x will be
0.75 and power factor is 0.7. So you use you use this formula okay and put x and given power factor in the formula with the given data, and you will find the answer. You'll find the answer as 96.98. Okay, you can solve that particular thing, right? ये अब repetitive हो गया ना. Similar question. चलिए, now let us solve next question for you. It is again very interesting question, है ना. अभी हमें क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछी गई थी. इन द लास्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछी गई थी, लॉसेस दिए हुए थे, केवीए रेटिंग आपको गिवन थी. यहाँ पर आपको losses पूछे गए हैं in this question and efficiencies are given. So it is reverse kind of question and it is important one. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं. Okay, so let us go through the question. So a 100 kVA transformer and with 440 oblique 11,000 volt single phase transform has an efficiency of 98.5% when supplying full load current at pointed power factor lagging, and an efficiency of 99% when supplying the full half the full load current at unity power factor. Now find the core losses and the copper losses corresponding to full load current. See, आपको अब losses पूछे गए हैं, efficiency is given, right? So here the given data is efficiency is, let us say efficiency 1 is given to you, which is 98.5%. Okay, और ये बताइए ये किस कंडीशन के लिए है. ये गिवन इज व्हेन फुल लोड इज देयर, दैट मीन्स x is equals to 1 and power factor which is cos phi 2 which is 0.8. Okay, now efficiency 2 is given which is 99%, very high. Okay, and it is at half full load. Half full load, that means half load, x will be equal to 0.5 and power factor is unity, that means cos phi is 1. Okay, now they're asking in that case you have to find the core losses and copper losses at full load, right? So ये कैसे निकाल सकते हैं अब हम. So see, what is the given data? Efficiency is given. So what is the formula for efficiency? अभी हमने derive किया जहाँ पर हमें losses होते हैं हमारे पास formula में. So efficiency is always output upon output plus losses. ओके, ये भी हमने देखा. अगर परसेंटेज में गिवन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, है ना. इसी को हम मॉडिफाई करते हैं जो अभी हमने किया भी था, है ना. सो दिस बिकम्स kVA into cos phi x times for fractional data x kVA rating into cos phi plus iron losses plus copper losses. Okay, copper losses like x square plus copper losses is full load. Copper losses at full load, इसको मैं लिख रहा हूँ. See, copper loss is actually your I2 square RO2, है ना. इसी को हम full load copper losses कहते हैं. Now this is fractional. किसी भी फ्रैक्शन पर आप, फ्रैक्शन ऑफ लोड पर आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला. सो फॉर द गिवन केस, फर्स्ट केस में आपको x का वैल्यू 1 गिवन है, दूसरे में ये गिवन है. सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला हियर and for the efficiency 1 it is 98.5. okay, so 98.5% means 0.985 is given data. Okay, and x is full load, that means x is 1 and power factor is point. So x is 1 kVA. Now what is kVA given? kVA is 100 kVA. So 100 kVA, so 100 into 10 raised to the power 3 VA into cos phi, which is 0.8 divided by your again 100 into 10 raised to the power 3 into 0.8 plus pi is unknown, ये तो हमें निकालना ही है, and x is 1 here, so it will be copper loss full load पर.
है ना. So from this you can rearrange this equation actually like this. 100 into 10 raised to the power 3 into 0.8 into 0.985 plus, okay, or let me simply solve this like this, okay, plus pi plus p copper loss at full load, ये डिनोमिनेटर में इसको हम यहाँ ले आते हैं. So 100 into 10 raised to the power 3 into 0.8 divided by 0.985. Okay, ये होगा यहाँ पर. And then from this unknown data which is pi and p copper loss full load will be equal to this divided by, okay, ये कितना आता है चलिए कर लेते हैं ऐसा, है ना. So 100 into 0.8 will be 80. So 80 divided by 0.985. Okay, so this becomes 81.218 into 10 raised to the power 3. Okay, and then minus this data, this is 80 into 10 raised to the power 3. Ultimately this will become 1.218 into 10 raised to the power 3, या फिर मैं इसको simply 1218 लिख सकता हूँ, ठीक है ना. So this is iron loss plus full load copper loss. This is equation number 1. This is equation number 1. अब दूसरा जो गिवन डेटा है वहां से भी हमें इसी तरह से की इक्वेशन मिलने वाली है ना. और इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, ओके, तो हमारे पास दोनों अननोन वेरिएबल्स, है ना, अननोन डेटा पी आई एन पी कॉपर लॉसेस होंगे. ओके, सो व्हाट इज द गिवन डेटा? एफिशिएंसी 2 इज गिवन एज 99%. सो 99% इज एक्चुअली 0.99, है ना. एक्चुअली क्या करते हैं आप 99 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर इंटू 100 रहता है ना. तो ये 100 यहाँ पर ले आएंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.99 लाइक दैट, है ना. तो 0.99 is when the load is half, that means x is 0.5 and power factor is unity now, so it is 100 kVA, है ना. power factor is 1, right. Simple. आपका जो basic तरीका है, you will have to solve that question with the help of such formulas. Okay, here pi is pi but x square here, so 0.5 square copper losses at full load. Now again rearrange the given equation. So pi plus 0.5, that means 0.5 square will be 0.25 copper losses at full load will be equal to 0.5 into 100 is 50. So 50 into 10 raised to the power 3 divided by 0.99 minus 50 into 10 raised to the power 3. Okay, so this will come out as 0.99. So this is 50.50, also 50.505 minus 50 into 10 raised to the power 3, and this is ultimately this will become 505. Okay, so this is equation number 2. This is equation number 2. क्या है यहाँ पर? This is pi plus 0.25 pu copper loss at full load. So ultimately now you have two unknown pi and p copper losses at full load, and you have two equations, so you can solve them, right? So if you simply subtract 1 minus 2, equation 1 minus 2, so pi minus pi will get cancelled out and this will become pu copper loss at full load minus 0.25 PCUFL will be equal to this was 1
इक्वेशन नंबर 1 में दिस इज 1218, 1218 minus equation 2 में 505. So from this it will be 0.75 and it will be equal to 1218 minus 505 is 713, and ultimately from this copper losses at full load will be equal to 713 divided by 0.75. So this will be equal to 950 950.667 watts. What is the unit for losses here? Watts only. So always remember the unit and do not forget to use that unit while you answer questions here, right? Now this is full load copper losses, है ना? अब iron losses बताना है तो use one of the equations and then answer it, right? So ultimately by equation number 1, so let me use other color here. So equation number 1 में आपके पास है pi plus PUFL is equals to 1 to 18. Okay, so from this PI will be equal to 1 to this minus 950.667. Ultimately this will be equal to 267.33 watt. So this is the case and this is the answer. So this way you will solve questions, right? So मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरह के क्वेश्चंस करा दी, जहाँ पर आपको लॉसेस केवीए रेटिंग गिवन है, ओके, वहाँ पर आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं, एफिशिएंसीज गिवन है आपको, लॉसेस पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? और आपको किस तरह से स्मार्टली फॉर्मूला को मॉडिफाई करना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है ना? एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, है ना? एक बार फिर से देख लीजिए, और फिर ये मैंने होमवर्क क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, उनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं साथ में, तो यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स, है ना? सी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट से आप बताते हैं, राइट? तो यू कैन राइट एज इट एज आउटपुट अपॉन, ओके, इनपुट इनटू 100, एक आप ये यूज कर सकते हैं, है ना? इसी तरह से हमने यूज किया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना? कोई जरूरी नहीं है आप यही यूज करें ना, आप यूज कर सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, ओके, इनटू 100 अगर एफिशिएंसी आपकी परसेंटेज में है तो, ठीक है ना? एंड फ्रॉम दिस यू कैन राइट 1 माइनस, है ना? एफिशिएंसी विल बिकम 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, या फिर यहां से भी आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी को 1 अपॉन 1 प्लस लॉसेस अपॉन आउटपुट, ओके। ये मॉडिफाई इस तरह से आप कर सकते हैं, और अगर आपको लॉसेस निकालने हैं, ठीक है, और अगर आपको लॉसेस निकालना है तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूलाज हियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको जनरली जो केवीए रेटिंग होती है ना, ये आपका आउटपुट पावर है ना, आउटपुट वहाँ से आप निकालते हैं, आउटपुट पावर आप वहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना? सो दिस इज आउटपुट मीन्स आउटपुट पावर V2 I2 cos phi 2 here, ओके। सो आप लॉसेज आप निकाल सकते हैं, किसी को भी मॉडिफाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप सिंपली जैसे हमारा जो फॉर्मूला यूज़ किया हमने, वहाँ से हम डायरेक्टली लॉसेज बता सकते हैं, क्या होगा देखिए, एफिशिएंसी इनटू आउटपुट प्लस लॉसेस विल बी इक्वल टू आउटपुट। सो अल्टीमेटली ये एफिशिएंसी आप यहाँ पर ले आइए, आउटपुट अपन एफिशिएंसी, सो लॉसेज विल बी इक्वल टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी माइनस आउटपुट। सो आउटपुट हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, है ना? आउटपुट हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, एंड अल्टीमेटली आउटपुट then 1 upon efficiency, and this is the case, okay? सो लॉसेस अब आप डायरेक्टली इस आप बोल सकते हैं कि भाई अब हमारे पास लॉसेस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, और हमने यही किया था अभी भी, है ना? आउटपुट मीन्स आउटपुट पावर बेटा ना, दैट मीन्स केवीए रेटिंग
इंटू कॉस फाई टू पावर फैक्टर है ना, इसमें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल एक्स यूज कीजिए, एंड सिंपल एफिशिएंसी गिवन है 1 एफिशिएंसी -1 कर देंगे। तो आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो बड़ा लग रहा था तो अभी वो छोटा लगेगा, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी यहाँ पर जैसे 99% था तो यहाँ पर आप यूज करें 1/0.99 लाइक दैट, ठीक है। सो इस तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, किस तरह से डेटा को हमने यूज़ किया, इंटरप्रेट किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है यहाँ पर, है ना। और इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 3 क्वेश्चंस है ना, फॉर योर प्रैक्टिस एट होम। सो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। एंड आंसर्स आर गिवन, अगर कुछ अलग आंसर आता है, कुछ प्रॉब्लम आपको जाती है तो यू कैन आस्क मी ओवर यू नो माई नंबर, ओके। अदरवाइज यहीं पर जो भी कमेंट सेक्शन है इसमें आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग है ना, ऑल दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड होमवर्क क्वेश्चंस, दे आर प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर coming exams, okay। So yes, that's it for single phase transformers. In the coming videos I will be preparing for few other machines, okay. So okay, enjoy the video, enjoy solving the problems based on transformers. See you in the next video.